اچھا آپ نذیر صاحب کی شکایت کی سی اگر رسول اللہ کچھ کہتے ہی نہیں سن تو شکایت کی لے کے آئے سن سردار ہے یہ سوال ہے ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੇ ਪੁੱਛਣਾ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਜ਼ਾ ਉਹ ਐਸੀ ਨਾ ਮੁਅੰਨਸ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਉਜ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਨਾਤ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿਹੜੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਦੀ ਹੈਰਿਸ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਉਹਨੂੰ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ تو یار تو ادھر دی ادھر لگا جانا ہے یار کتنے سوال پوچھنے نہیں اور ادھر مار دے گا دودھ والے ٹرک نو ਲਾਤ ਉਜ਼ਾ ਮਨਾਤ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਹੈਰਸ ਦੀ ਗ੍ਰੇਡ ਤੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ حضرت عیسیٰ ਦਾ ਪਿਓ ਤੇ ਗਿਆ ਹੀ ਫਿਰ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਚਾਚੇ ਹੋਰਾਂ ਤੇ حضرت ابو بکر نے فرمایا سی چپیڑے پڑی تھی اس بات کے اوپر جو بات کہی تھی انہوں نے چلو تو حضرت ابو بکر نے فرمایا تھا انہوں نے کہا تھا کہ میں جو یہ غلط بندے ہیں جو ان کی صفات ہے میں کہتا رہوں گا چاہے جو مرضی مجھے کہو جھوٹ لکھا ہوا ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو آپ نے بولا لفظ جھوٹ لکھا ہوا ہے میں نے اپنی طرف نہیں بنایا میں ان کی کتابوں سے لکھا میں نے مرزا صاحب نے لکھا نا ان کی کتابوں میں میں نے تھوڑا مان تو ساری باتیں لونگڑ لکھا ہوا تھا سور کے آگے سور لکھے ہوئے تھے یہ سور ہے ہیلو اور کی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوا آپ ایمان رکھتے ہو اس پہ یار ہم کو جا کے وہ ہمیں ہماری کتاب پہ بلیو رکھتے آپ کرسچن ہیں آپ کرسچن ہیں جو ہمارے پاس ایویڈنس ہے ہم تو وہی کہیں گے نا یار ایویڈنس اگر مرزا صاحب وہ اس ایویڈنس نو مرزا صاحب قبول کیتا سی تسی ایویڈنس نو جفی مارن لگے ہو تسی مرزا صاحب نے چھڑ دیتا ہے جو صفات ہوتی ہیں وہ لکھا ہے علی کو خدا کا شعر کہا تھا کہ نہیں کہا تھا خدا کا شعر کہا تھا نا کہندے سی یہ کتاباں جڑیاں نے محرف تے مبدل ہو گئی خدا کا شعر کہا تھا کہ نہیں کہا تھا مجھے ہیلو جی جی جو صفات ہے او بھائی اللہ لو جی حضرت علی شریف بات پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہی ہے نہیں تسی یہ کہہ رہے تھے لات و منات سے متعلق تو حضرت ابو بکر نے کیا سی نا امسوس بے بدری لات کافروں کیا سی جوہر صاحب کو آواز آ رہی ہے محنتیں آ رہی ہیں آپ کی آواز آ رہی ہے میرے خیال ہے عامر صاحب کی کوئی پرابلم ہے عامر صاحب میرا خیال لاکھا غیر میں ہے آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے ٹرکوں کی سڑکوں کی آپ کی بریکوں کی اور آپ کے ٹائروں کی بھی آواز آ رہی ہے واہ جی واہ یار شہر صاحب تو بڑے میڈیا کے بندے ہیں مجھے تو آج بات چلائی ہے اور بڑی اچھی طرح بولتے بھی نہیں ہیں پیار سے بات کرتے ہیں یار اچھا یہ تو رسول اللہ کے دین پہ چلنے والے ہیں بڑی پیارا آدمی ہے اس نے کبھی کسی کی بدخواہی نہیں کی کوئی گل نہیں 2 دن رہ گئے دیکھیں وہ اپنا ٹوائلٹ کی تصویر لگائے گا اپنا فلش کرے گا پھر جلے تیری ماں بہن نے کہ کیتی نا تینوں پتہ لگ جائے گا کتنے پیار نہ ہو نہیں باقر صاحب مرزا صاحب کو نکاح کٹے گا ٹھہر کے آپ بھی ادھر ہیں میں بھی ادھر ہوں آپ بھی ادھر ہیں میں بھی ادھر ہی ہوں میں نے ہر چیز سے ملک صاحب آپ نے کبھی نہیں یہ تو وہی بات ہے کہ سانپ کہے کہ میری فصلت بدل ہو گئی ہے ڈنگ باہر یا بچھو گئے چلو آپ بھی دیکھ سگنلاں نو کی ہو گیا ہے میں کچھ ویکن کی ضرورت نہیں ایسا کیڑا غیر علاقہ جتنے سگنل عامر نذیر صاحب ملک صاحب نے کبھی گال نہیں کٹی مرزا صاحب نے او یار چھاڑ پڑا یار وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں کبھی کٹی میں توبہ کر لی ہے اچھا توبہ کے دروازے کھلے ٹھیک ہے یعنی کہ کیتا سی کام لیکن آنے نہیں کرو انہوں نے پتا ہے کہ اگر دنیا سے بڑی چلے جائیں تو اگر ضرور ملیں گے چلو کم دوسرا پوائنٹ ہے چلو آپ عامر صاحب سے بات کریں عیسیٰ کا باپ ہے کہ نہیں ہے جو بتا دیا نہیں ہے یار نہیں ہے رحمت صاحب بتا دیا اس نے یہی کہا کہ نہیں ہے انسانی باپ کو نہیں ہے نہیں ہے وہ حضرت مرزا صاحب نے فرمایا تھا کہ وہ ہیم افروڈیٹ تھی حضرت مریم تو جو حضرت عیسیٰ کو جو عیسیٰ کا باپ مانتا ہے آپ اس کو کس کیٹیگری میں ڈالتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں وہ ملحد ہے بے دین ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی اس کی کوئی دعا قبول نہیں عامر صاحب سے پوچھ لیں ذرا عامر صاحب کیا خیال ہے جو یہ کہتا ہے اس کی لنڈی کاٹ دو عامر صاحب آپ اس کا چھوٹا سوال ہے چھوٹا بڑا ایزی سوال ہے کیا سوال ہے
बता दें जी, मैं बस सब आप बता दें, मेरी आवाज नहीं पूरी तो मुझे। वो कह रहा जी कि अगर कोई ऐसा कहे कि हजरत ईसा का कोई इंसानी बाप है तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ कैसा सलूक करोगे, ਉਹਨੂੰ किस कैटेगरी ਚ ਪਾਓਗੇ, ਮੁਲਹਿਦ ਮਜੂਸੀ? नहीं ਉਹਨੂੰ ਲੋਹੜੀਆਂ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਚ ਪਾਣਗੇ। ਲੋਹੜੀਆਂ नहीं, कुरान के खिलाफ है बंदा वो। अच्छा, कुरान के खिलाफ है कि कुरान की फेवरेट? ਕੁਰਾਨ के खिलाफ। कुरान पता नहीं केड़ी चीज है। यार कुरान के खिलाफ है, कुरान के खिलाफ है वो, कुरान के खिलाफ है। जो बंदा कुरान के खिलाफ होगा वो आप वो कौन सी कैटेगरी में आता है? उसकी दोबारा सुनते करनी पड़ती है तो यार कैटेगरी में तो मैं कैटेगरियां बनाई हैं वो लोहड़ी कैटेगरी में आता है यार, जेड़ा नहीं बाप बनता। बात ही यहाँ पे हो रही है, उनकी बात ही यहाँ पे हो रही है यार अभी, क्योंकि क्या नाम है ये तो नहीं ना हम ना तो तुम हमें सदमे दो ना हम तुम्हें सदमे दें, चलते रहे इस तरह का। ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਭੱਟੀ ਯਾਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਖਾ ਲਈ ਜੇ ਆਪਣਾ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ न ਸ਼ਾਇਦ तुम ਭੱਟੀ ਹੈ। सदमान निदा को देते न फरियाद हम करते। सफिया नु जिन्ने मर्जी सदमे दे खातून नु काम का विच घसीट रहे हो। निदा ने आप आके दसिया सारी गल। वो तो शफिया भी खुद ही बताती है सारा कुछ। वो कहती है मुझे निकाल दिया, मुझे उसने शफिया कहती है मैं उसने दावा कर दिया कि मुझे क्यों निकाल रहा हूँ। यकीन माने कि अब्दुल्ला मैकला, सबर साहब आप ये सबर साहब अब्दुल्ला मैकला मैक बात थोड़ी सी थोड़ी इतनी अब्दुल्ला तेन बढ़िया नहीं, तू TLP का बहुत बड़ा अपना सादरिश नहीं है हुन ਉਹਦੇ अंदर हो गया ते पहला ਉਹਨੂੰ थले ला न तुम सदमे हमें देते न हम फरियाद यूं करते, न खुलते राज सरबस्ता न यूं रुसवाइयां होती। सुभान अल्लाह। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਭੱਟੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ। अच्छा ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਬਰਾੜ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਬਰਾੜ ਸੀ। अच्छा ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। हाँ ਉਹ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਰਿਦਮ ਨਾਲ, ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਕੋਈ
9:30 please. Thank you. Thank you. Cheers, thanks so much. Unit available in zone ਤੁਸੀਂ low. ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਟੱਟੀ ਨਾ ਖਾਇਆ ਕਰੋ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪੀਤਾ ਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ पेट के आज के बाद सारी बीमारियां दूर जा मूत्र पिया कर जा ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਰਵਾਇਤ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਰਿਵਾਇਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਸ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੂਨ ਦੀ बम्बास्टिक और शासमियत वाल चला गया। अब जानिए हो नहीं है जानी हो रही है ये दिसंबर 1905 के रोया है हजरत मसीह। नहीं तो मैं ये शादी में तो कैसे हो आप इसका मजाक उड़ा रहे हैं ना की वजह से। ताइयों आता है तारक चौहान तो तारक जवेद है दोनों जुड़वा भरा आ गया ताज तारे का तो मैंने मुंह बता गया मुसलमान आ गया ਬੈਂਡ ਜੋ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਬੈਂਡ ਦੀ ओ मुसलमान ਭਾਈ ਉਹ ਗਾਲੀ ਨਾ ਦਿਓ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਉਹ ਭਾਈ ਗਾਲੀ ਨਾ ਦਿਓ ਭਾਈ ਗਾਲੀ ਨਾ ਦਲੀਲ ना यार ना ना वालों हजूर थले दी जाओ सदा ना, पैरा गाली दे दे रहे थे। हजूर दी सदा पैरा दे गाली वाली सुन क्यों रहे हो? ਤਲੇ ਲੈ ਕੋਨੇ ਹੁੰਦੀ ਦੇ ਉਹ ਬੈਂਡ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਜੁਮਲਾ हजूर दी सदा पैरा हजूर दी सदा पैरा हजूर दी यार खाब ते सुनना बड़ी जबरदस्त खाब ਬੰਬਾਸੇ ਸਾਹਿਬ तो सुनिए यार ਬੰਬਾਸੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਮਾਦ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕੋਈ ਜੀ किन्ने जी ਤੁਹਾਡੇ ਦਮਾਦ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ हाँ जी बस सुनता कराने वाली रह गई हैं वो भी करा देंगे। ਉਹ ਤਾਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਬਣਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸੁਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਖੁਲਾਇਆ ਜਾ ਕੇ ਚ ਉਹ ਕੋ ਕਾਲਾ बड़ा बकवासी है ਉਹ ਕਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਗਈ ਸੀ ਕਾਲਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸੁਰਾਗ ਪਾਉਂਦੇ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਨਾ ਕਰ ਛੱਡ ਕਰਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਯਾਰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੈ ਯਾਰ ਛੋੜ ਤੂੰ ਪਰਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਗਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੀਐਚਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਾਗਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਾਗਲ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ उसको पता ही नहीं है कि उसके दो बेटे हैं उसको पता ही नहीं है केड़ी टुकड़ी से जेड़े गल्ला कीते थी। एक कुकड़ भी था जो सफिया के साथ बातें करता है ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ सफिया बाजी के साथ मिर्जा साहब की बेइज्जती है ऐसी कोई गल नहीं। ऐसे तो बड़ा अच्छा पैगाम से मुर्गी ने ਬਿਸਤੀ दिता। ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪ ਲਿਖ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਵਕਤ ਪਿਆ ਮਰੀਦਾਂ तो ਨੂੰ मुर्गी ने तो बड़ा अच्छा पैगाम दिता सी, कोई बुरा पैगाम तो नहीं। ਤੇ ਕਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ ਆਪਣਾ ਨਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮੁਰਗੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ मुर्गी कहते सी खर्चा खुर्चा किया करो इस्लाम वास्ते मोमनो। ਵਾਹ और यार जो मोमन लोग होते हैं ना वो हवाओं से बात करते हैं चलते चलते छिकते मैं जब चलता हूँ मुझसे अल्लाह की कसम हमारी बातें करती है उसमें कौन सी बुरी बात है नहीं तो मुर्गे बातें कर सके भाई भी बातें कर मुझसे दरख्त बात करते हैं कि मैंने टक्कर मार दरख्त ही ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ अरे बाजा आ गए सबदी माँ आ गई है ते सबदी माँ आ गई। ਉਹ ਟੁਰੀ ਗਏ ਨੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮੁਰਗੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖੋਤਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਯਾਤੂਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਜਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ ਉਹ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਚੱਲ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਬੀ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਯਾਤੂਰ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕਸਵਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ये सच सच ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਆਪਣਾ ਸਲਮਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰਾ ਕੁਰਾਨ ਹੀ ਪਿਛਤੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ
ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਹਿਣ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਸਨ ਕਾਜ਼ਮੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ who the hell you are तुम कैसे किसी को मुसलमान कह सकते हो हम बताएंगे वो भी अपना दूसरा अपना नज़ीर जाके उन्हें कंपटीशन हो गया था हसन काज़मी का वो कहेंगे who the hell वो अंग्रेजी वाला मुसलमान है who the hell you are ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਾਸਿਕੀਨ ਹੈ चल यार ਨੂੰ अपना सौदा बेचने मैं चलना है मैं लेकर के शीला ਤਾਰਿਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਅੱਛਾ ਇਮਾਨ ਅਫਰੋਜ਼ ਅਕਬਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋ ਘੰਟਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨੰਗੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਈ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕੋ ਭੇਜੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮਦ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤਰੀਮ ਹਸਪੀਟਲ ਸਾਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਸਪੀਟਲ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਗਲਤ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਗਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਤੂਫਾਨ ਜੱਟ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲਵਾਂ ਜੇ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਹੀ ਰਹੇ हैं तो मैरिज भी सब क्वेश्चन है कि बड़ा सिंपल था कि ये जो लोग बदले होते हैं दोनों तरफ से क्या ये अमली तौर पे भी आप इनको लगता है कि ये अमल भी करते होंगे प्रॉपर नमाज भी पढ़ते होंगे दोनों तरफ से क्या मतलब मान लो जो उनके पीछे वाली आंखें वो भी नहीं होती नहीं दोनों साइड से मतलब जो इश्क में अंधे होते हैं लोग क्या वो अपने अमल से भी ऐसे लोग होते हैं मुझे नहीं लगता इनके ये अमल करते हैं बस इश्क में अंधे होते हैं अमल कौन सा अमल करते हैं जैसे मतलब एक जैसे आपने मान तो लिया कि मैं मुसलमान हूँ उसके बाद बड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है आपके ऊपर आप कारोबार करें ईमानदारी से करें आप जो है हर काम आपका वो दाखिले इखलाक के साथ रहें बच्चों से प्यार करें बहुत बड़ी जिम्मेदारी पड़ जाती है उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि जो लोग इसमें इतने होते हैं वो ये सारी चीजें अपनी जिंदगी में कर रहे होते हैं पता नहीं कुछ समझ नहीं आई गलती ये टोनी साहब कह रहे हैं कि मैं मिर्जा साहब की सीरत बयान कर रहा था उसमें से कौन सी बात मैंने अपने मुंह से की है सारी वही सीरत बयान की है जो सीरत नादी में लिखी हुई है सीरत नादी में और साहब अहमद में जो सीरत आपने मिर्जा साहब की लिखी है मैं वो बयान कर रहा था उससे उनको गुस्सा लग गया जी और जिक्र हबीब में भी है हाँ जिक्र हबीब तो उससे उनको गुस्सा चढ़ गया है अकबर खान साहब को मैंने बड़ा कहा कि ये मैंने भी अपने पास से बात कही है तो आप बताएं बात पता क्या है बात ये कि चीजों को दो तरह देखने का होता है जो बंदा अपनी बात खुद लिख रहा है अपनी बुराई की बात बंदा खुद क्यों लिखेगा सीरत में मिर्जा साहब ने लिखी हुई है नहीं मिर्जा साहब ने लिखी मतलब कह रहा कि जो अपनी बुराई की बात है वो क्यों लिखेगा ये जो दो देखने के मिर्जा साहब कह रहा है अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या नाम है कुछ लोग जो है उनके बारे में कहा जाता है कि ये बड़े नेक लोग हैं लोग उनके बच्चियां अपने पास उनके भेजते हैं जाके उनके पढ़ती हैं उनके साथ ठीक है नहीं दे रहा हूँ दूसरा देखने वाला कहता है कि यार देखो ये जो बंदा है ये बच्चों को पढ़ा रहा है ये इनको शर्म नहीं आ रही दो तरह की आंख होती है तो नहीं मैं तो कहता हूँ जो अपनी बेटी को दूसरे किसी मुस्टंडे के पास भेजता है चाहे कुरान पर नहीं भेजे वो सबसे बड़ा हरामी वो खुद है ये लफ्ज़ आपका बड़ा जबरदस्त है मुस्टंडे के पास भाई जो भी शख्स है नामहरम उसको आप बेटी भेजेंगे अपनी तो ये है भाई लड़की को जवान बंदे के पास भेजोगे तो क्या करने भेजोगे एक ही काम होता है आप बेवकूफ हैं आप या तो फिर क्या आपको पता ही नहीं कि बंदे क्यों कर दे रहे होता है क्या गलती है उसी क्या सब किया आपने कुछ नहीं कर सकता तो भी तो नहीं उससे हमारे
रसूलियत काम नहीं करती होगी। तो अगर ऐसी बात है तो फिर पर्दे के अहकामात क्यों दिए गए अल्लाह ताला की तरफ से? अगर उसको पता है तुम्हारे जैसे भी होंगे जो कुछ नहीं कर सकेंगे औरत के साथ, तो ठीक है, तो फिर क्या? पर्दे के मुताबिक आप अपनी लड़की को किसी गैर मर्द के पास Tryna know if I can rock your world, yeah, rock your world, baby girl. It's me and you against the world. Everything and anything you deserve. Anytime in a part, pretty fine in the side. भाई मिर्जा साहब लिख रहे हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शहादत में जुम्बश की होगी। ये कौन सी किताब में लिखा हुआ है? कौन सी किताब में लिखा हुआ है? आपने पढ़ी है वो किताब? मैंने तो पढ़ी है, लेकिन वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जुम्बश करिए, शहादत में जुम्बश की थी। ये तो मिर्जा साहब ने खुद लिखा है ना, अपनी तरफ से कमेंट किया है। ये मिर्जाई जो है ना, बेअकली से खामखा एक चीज को डिमांड करना शुरू हो जाते हैं। ये मिर्जाइयों ने रवायात गलत बताई हुई हैं। 15 साल की आयशा लड़की मिर्जा साहब के पाँव दबा रही है। ये बेशर्मी की इंतहा है तुम मिर्जाइयों की। 15 साल की लड़की आयशा अल-फजल में लिखा हुआ है, वो मिर्जा साहब के पाँव दबाती तो मिर्जा साहब बड़े खुश होते थे। ये तुमने अल-फजल में लिखा है, ये बेशर्मी की इंतहा है कि नहीं? इसको तो कह रहे हैं कि वो नबी रसूल भी मानते हो, फिर ऊपर ऐसे तोहमत लगाते हो। लो जी, अननाउन साहब भी आ गए। अस्सलाम वालेकुम अननाउन साहब, पहली दफा तशरीफ लाए आप भी। ये तो बाजी है जी, अननोन बाजी है। अच्छा 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 अच्छा, आप आया करें, गौर किया करें, मिर्जा साहब की तारीफ पढ़े, गौर किया करें, अपनी तरफ से नए नए फैसले न पेश किया करें। मिर्जाई आपकी बात ध्यान से किया करें, क्योंकि बात ये है कि अंदर का ये इखलास जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इखलास ना हो तो वो इखलास कौन सा? दुश्मन मार गया, बानों के खंजीर हो गए, औरतें कुत्तियों से पड़ गई हैं, वाला इखलास ठीक है? जो हमारी फजा का कानी और हमजा है वाला ठीक है? ऐसा नहीं है, ये किसी और ने लिखा हुआ है। ये देखिए ना उन्होंने किस रंग में लिखा है। हाँ, किस रंग में? वो कौजे जो वल्दू जना के लाते हैं वो भी झूठ बोलते हैं इस बात में। मिर्जा साहब ने लिखा है, ये ठीक लिखा हुआ है। ठीक है, बात कर सकते हैं। नहीं, ये काले रंग में लिखा हुआ है कि रंग काला खास में है। शर्म करो मिर्जा साहब की तालीम को क्यों छोड़ते हो? और किसी के पास नहीं है, जो भी उन्होंने लिखा है कुरान से लिखा हुआ है। हाँ, तो जो मिर्जा साहब ने लिखा है वही तरीके हम करेंगे। मिर्जा साहब ने कहा जो गाली तू हमें देगा वो हमसे सुनेगा। मिर्जा ही पहुंच गया। अलवी साहब, अब कोई आप भी हमें कोई बात सुनाए, आपने क्या सीखा है अभी तक? अननाउन साहब आप बताएं। वालेकुम सलाम। अच्छा, हम तो हर रोज सीखते हैं आमिर भाई से, सब भाइयों से रोजाना जब भी टाइम होता है, जिधर भी ये लाइव जाते हैं। अच्छा, आज का बहुत ज्यादा जो सीखने से मिला बहुत इंटरेस्टिंग था, वो अपना बिलाल भाई की जो थी ना, अच्छा, वो जो असेंबली वाली करवाई थी,
उन्होंने बड़ी दिलचस्पी से शुरू भी की, मैंने सुनी भी बड़ी बड़ी। Transaction cancel. Something went wrong. Please try again later or contact our support team. Don't know what happened in it. Here is bad signal of internet. नहीं हो गया मिर्जा साहब को नहीं वो वाला जिला जरा सी हुशियारपुर ते उन्होंने जिक्र किया है ना ਉੱਥੇ ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਉੱਤੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਚਿੱਲਾ ਵੀ ਪੂਰੇ 40 ਦਿਨ ਕੱਟਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਸਵੇਰੇ ਮਜ਼ਈਆਂ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲਿਖੇ ਕੇ ਸੁਣਾਏ। नहीं नहीं है कि वो एक प्रैक्टिस की गल कर रहे हैं कि जेडे मतलब हर वक्त यही काम करते थे जेडे चिल्ला कशी करते, कोई झूठा लटकना गया सी और उस तरह की कोई उन्होंने नहीं की। वाकया जेड़ा वालों है कि जी जो उन्होंने निशान उन्होंने को मंगया गया सी और अल्लाह ताला ने उन्होंने कहा सी कि तेरी खुदा कुछ है हुशियारपुर न हो तक वो बैठे रहे। मैं कब जिला तो ना पटिया ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਯਾਨੀ दूसरे लोग की हर वक्त मुजाहिदा ਤੇ ਸ਼ਦੀਦਾ ਚੱਲਦੇ ਨੇ लेकिन उन्होंने ऐसा कोई नहीं किया। मसलन एक दफा उन्होंने अपने नफ्स को पाया से 6 महीने रोजे रखे थे, लेकिन मेरा मतलब ऐसा एज ए प्रैक्टिस ने इख्तियार किया। 6 महीने रोजे का भी है, चिल्ले का भी है। हाँ मुजाहिदात तो करते रहे ने, हुशियारपुर भी चिल्ला कट्टे। हाँ लेकिन मेरा मतलब उन्होंने प्रैक्टिस नहीं रही। अगर उन्होंने 75 साल उम्र सी तो उन्होंने एक दफा वो 6 महीने का जेडे रोजे रखे थे और एक दफा उन्होंने वो हुशियारपुर चिल्ला के कटिया था। लेकिन उसे हुशियारपुर का जेडी उसे अल्लाह ताला दे हुक्म ते सी ना। फिर इनकार तो किसे चले भाई अच्छे वो एज ए प्रैक्टिस कह रहे हैं कि जिस तरह सूफी आदा होता है कि हर वेले अपने आप को मुश्किल च पाई रहता है जिंदगी चक्कर से कटदा कि बार-बार चिल्ले थोड़ी नहीं। हर वक्त चिल्ले कटते रहते हैं, कोई कब्रस्तान जाके लेटते हैं लोग, कोई खूह उल्टा लटकते हैं, बड़ा कुछ करते हैं, जंगलों के विच रहंदे ने जाके। और जो तबीला है ना शेर मेर दा वो बार-बार जंगल गया। शेख मेहर अली का केड़ा जिथे हुशियारपुर जिला कटिया सी शेख मेहर अली का तबीला। हाँ हाँ लेकिन उन्होंने कटिया ना, वो जाहिर अल्लाह